Namaskar, hello and welcome to NCERT's special live phone and interactive program, SAHYOG, Guidance for Mental Well-being of the Children. My name is Tanvi Khurana, and in this particular session, we are going to discuss the topic Managing Emotional Well-being, a key to happy life. So, if you can manage your emotional life, emotional well-being, then you will be happy. And how is this going to happen? This is the discussion, and if you want to participate, please feel free, give us a call on our number 8800440559. You're watching us live on PM eVidya channel number 6 to channel number 12, and also on our YouTube channel NCERT Official. In the live chat box, write down your questions, queries related to this particular topic and share them with us. If you want to email us, the email ID would be sayog.ncert@ciet.nic.in. We have two experts with us who are going to discuss this entire topic with us till 5:30. So let me introduce you to those two experts of ours, and we have with us from Regional Institute of Education, Ajmer, NCERT, Dr. Manish Agarwal. Welcome, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. And we have the practicing counsellor, Ms. Jyoti Tiwari. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So let's begin this conversation on managing emotional well-being, a key to happy life. Before understanding how is it a way of a happy life, let's just understand what exactly is emotional well-being. So I would like Dr. Agarwal to answer this question. Sir, what exactly is emotional well-being? Please explain this to our viewers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The first and the foremost thing is to understand emotional well-being. We need to understand emotions and feelings. As we know, emotions are associated with bodily reactions that are activated through neurotransmitters and hormones raised by brain, while feelings are conscious experiences of emotional reactions. So we can understand emotional well-being is the ability to deal with emotional crisis occurring in life. As we know it, the ability to understand, accept, manage feelings through challenges and changes. तो हम इमोशनल वेलबींग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे लाइफ में जो इमोशंस हैं हम उनको समझें कि वो किस तरह के, किस कैटेगरी के इमोशंस हैं, और उसको पहचानने के बाद हम इसको रेगुलेट करना समझें, और उसके साथ साथ हमें कुछ इमोशंस मैनेज करना है और उसके बाद कंट्रोल करना है. इस तरीके से हम इमोशनल वेलबींग को समझ सकते हैं. और आजकल हम ये देखते हैं अक्सर फिजिकल वेलबींग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे फेवरेटिज्म है उसकी तरफ, तो 6 पैक एप्स की तरफ लोग जा रहे हैं और अपना इमोशनल हेल्थ की तरफ ध्यान कम देते हैं. और इसके साथ साथ जैसे बच्चों को हमने देखा है कि हम अपने बच्चों को घर में सिखाते हैं डेंटल हाइजीन, कि बचपन में सिखाते हैं कि उनको दांत कि बेटा या बेटी आप ब्रश कीजिए, कि सुबह भी कीजिएगा और सोने से पहले भी कीजिएगा, और हम उनको इमोशनल दिए. और इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ का जो हमें पता लगता है कि अगर हमारे कहीं इंजरीज होती हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज इजीली. जो जैसे पेरेंट्स में देखते हैं या कोई भी हो, पूछता है बेटा कहीं घाव तो नहीं लगा, कहीं खून तो नहीं है, आसानी से पहचान लेते हैं. लेकिन जो इमोशनल इंजरीज हैं उनको हम पहचान नहीं पाते आसानी से. इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है. तो इसी तरह से हम इसको इमोशनल वेलबींग को आसानी से समझ सकते हैं इन शब्दों के साथ. थैंक यू मैम. जी, थैंक यू सर. हम मैम से पूछना चाहेंगे, ज्योति मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो जैसे इमोशनल वेलबींग होता है, फिजिकल वेलबींग होता है, उसी तरह साइकोलॉजिकल वेलबींग भी होता है. तो साइकोलॉजिकल इंजरीज भी बच्चों को होती हैं, एडोलेसेंट्स को होती हैं, तो कौन सी वो वजह होती है जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल इंजरीज होती हैं और उसकी वजह से इमोशनल वेलबींग पर असर पड़ता है? तो क्या आप हमें कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल Tanvi ma'am, very nicely it was explained by Dr. Agarwal that we as parent, teacher or students, we all focus on physical well-being and ignore our mental health or emotional well-being. If you know that thousands of thoughts minds throughout the day, some are positive, some are negative,
And these thoughts create feelings in us, and these feelings drive our behavior or our action. Emotional well-being does not mean experiencing only happiness, excitement, love, only pleasant feelings. In fact, unpleasant feelings such as sadness, anger, worry, and fear, these are very normal feelings. With these unpleasant feelings, when these unpleasant feelings go out of control and students or children are not able to manage, even we are not able to manage these unpleasant situations or feelings, then it becomes a great concern. And then these feelings are the outcome of some of the psychological injuries. What could be the root cause of such feelings, situations, or untreated psychological injuries? Let me take one example. Last evening, I received a call from a child of board class. He was very concerned with the school's closure situation. Again, COVID is back. He was very anxious about not reopening of the school. Scared with the feeling of left out, a feeling of loneliness, overwhelmed with emotions. Everyone wants to be loved and accepted. In a classroom situation, when a child is not able to make friends, everyone wants to have many friends. So when a child is not able to make friends, what he feels? He feels rejected and goes through emotional turmoil. Another, every child is having unique ability, different type of learner. Again, with COVID situation, if you take in the relevant context, some of the students will not be able to pace up with the online classes. The fear of failure, performance anxiety, it may lead to fight or flight mode. The loss or medical illness, in common, very common, and that is in the family. When it is in the family, it affects child's ability to cope up with the situation and make him struggle to manage the emotions. Low self-esteem, that I'm good for nothing. Or if teacher says, or if anyone else says, you won't be able to do it, then these type of comments pull child down and make him get stuck in negative cycle. Guilt, a feeling. Suppose a child who did not attend online classes, later on when he realizes, when he joins offline classes, he realizes he missed lot of portion. Then a guilt, why did I do that? Why didn't I attend those classes? Those guilt, the feeling that you have done something wrong. It may be taking a pencil of his friend without his permission, or maybe cheating in a test, or maybe not attending online classes. These all things disturb emotional hygiene of a child. So these all are common psychological injuries that trouble emotional well-being or our mental health. Thinking and rethinking of some unpleasant event which has happened in past, it disturbs child again and again. It also makes a child vulnerable and susceptible to emotional hazard. These injuries, if we do not treat them well on time, not addressed in time, then they cause depression. It may be eating disorder, violence, substance abuse, and self-harm. Do we impart emotional education in schools? We are very fortunate that now schools and colleges, even corporates, are working in the direction of bringing emotional education in classroom. This platform is one of the initiatives taken by the government by not leaving an emotional education on children only, to deal with the emotional education on their own. We all are working in this direction. So these all are the emotional injuries. If not treated well, then they affect students' emotional well-being. Again, as Dr. Agarwal said, that emotional well-being is ability to handle the emotions, to manage the emotions, to accept the emotions. So these all emotions are to be managed. This is what teaches what is important now in this scenario. Okay. Thank you. And you rightly said that we need to treat our injuries well, otherwise they will lead to either depression or violence or many such activities. All right. So, sir, can you tell us that how can we manage, what are the measures to be taken to manage the emotional well-being so that one or an individual can lead a happy and prosperous life? Yeah. We need to shift from one dimension to another dimension. Earlier, we need to understand that prevention is better than cure. But now it should be shifted to preparation is better than cure. As we prepare our students or children for emotional health, if they are able to understand their emotional health, they will be prepared to face crises occurring in life.
because we don't need to make our students success programming in their minds. They need to value failures as well as success in life. And in any circumstances, they need to live a life so that they can excel in each domain. इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इमोशनली हेल्थी होने के लिए अपने इमोशंस को समझना है। और उसके साथ साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फेलियर्स, हम फेलियर को एक नेगेटिव कनोटेशन के साथ देखते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे कि जो भी महान पर्सनैलिटीज हुई हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, उनके जीवन में स्ट्रगल्स और फेलियर्स रहे हैं, तो फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, तो वी नीड टू वैल्यू इट एज सक्सेस। तो जब हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझें और आगे बढ़ते रहें, तो इससे हमारा रेजिलियंस बढ़ेगा और रेजिलियंस के साथ साथ हमारी इमोशनल वेलबींग भी बेहतर होगी। तो ये कुछ एक इस तरह से हम कर सकते हैं मैम। और इसके साथ साथ हमें फोकस करना है अपने जीवन में बच्चों को कि वो इन चीजों को ध्यान में दें इमोशनल वेलबींग के लिए। इस तरीके से हम ये शिफ्ट करके इमोशनल वेलबींग को और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं WH वाले, तो WH फैमिली की जो प्रिपरेशन है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो इसके बारे में आप इमोशनल वेलबींग से जुड़ा हुआ हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ, यस मैम, these are very important words which will help us to understand our emotions and balancing them as well as to lead a happy life. The first one is WHO, who we can call who. So to whom we are talking, it means our children, our students, they need to learn about emotional health and emotional well-being, so they will value their emotions as well as others' emotions. जब बात आती है अपने इमोशनल वेलबींग की, तो हम फोकस होते हैं कि हमारे इमोशंस की कदर की जाए, हम जबकि भूल जाते हैं कि दूसरों के इमोशंस की कदर करना। तो इसमें अपने इमोशंस के रेस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी हमें रेस्पेक्ट करना है। व्हाट, जो हमें बताता है कि रेगुलेट या मैनेज करना, वी नीड टू रेगुलेट और समटाइम्स मैनेज, वी कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग एट वंस टाइम। तो हमें ये नहीं है कि हम सोचें कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हों, कुछ इमोशंस को हमें मैनेज भी करना पड़ता है। उसके साथ साथ कब से, व्हेन। तो सिंस चाइल्डहुड हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना है कि उनको अपने इमोशंस के बारे में समझ विकसित करें और इमोशनल हेल्थ के बारे में। इसके साथ साथ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी आर लर्निंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंट, so they can be emotional intelligent people, where we can start it from home as well as schools. These are two important places. Second, last not the least, how, by developing emotional competencies, तो हम उनको इमोशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको सिखाकर बच्चों में डेवलप कर सकते हैं इमोशनल वेलबींग। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से WH फैमिली हमारे इमोशनल वेलबींग में मदद कर सकती है। जैसे आपने लास्ट पॉइंट बताया हाउ का डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी, सो इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल ज्योति मैम से पूछना चाहूँगी। सो मैम, व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू एनहांस द इमोशनल कॉम्पिटेंसीज एंड ऑल्सो बिकॉज इमोशंस आर रिलेटेड टू आवर बॉडी, सो हाउ कैन द इमोशंस अफेक्ट आवर बॉडी रिस्पॉन्सेज? Any points you have regarding this? Yes, Tanvi ma'am. Tanvi ma'am, what are emotions? If we see, emotions are feelings. How do we express these emotions or these feelings? We need a medium to express these feelings. Impulse is a medium of these emotions. So we can say that seed of all impulse is a feeling busting to express itself in action. Anger, fear, disgust, sadness, happiness, love, and surprise. These are some of the basic emotions. Now, when we talk about these basic emotions, then what happens that if we see when we are very angry, what happens? Blood flows down to our hands, and when blood flows down to our hands, then we tend to strike something. So that is how emotion affects our body responses. Similarly, when we are sad, in that case, our body
reacts in different ways. So in each emotion prepares our body for a different kind of response, according to the Daniel Goleman. Now when we are happy or feel loved, our brain center that inhibits negative feelings gets activated and offers body a general rest as well as relief and enthusiasm, calmness and contentment. So we feel differently when we have different types of feelings and different types of emotions. These all are actions of our body against the impulses. And what are impulses? Impulses are the medium of emotion. Now why did I discuss these responses? So that you know about the actions. Some could be positive actions, some could be negative actions. As we have some positive feelings and some negative feelings. In the same way, the cycle of negative actions caused by negative thoughts and feeling is to be worked upon. We all are here to discuss those negative emotions, negative feelings, negative actions. As very rightly said by Manish sir, let us prepare our students to acquire emotional competencies. Are we ready for 5 steps emotional booster program? We all are working at the moment immunity booster program. So let us have emotional booster program. The first step is knowing your emotions. Very rightly said by someone, if we can't notice our feelings, we are at mercy of that feeling. So children, you should be very observant about your feeling and you should be able to identify, name that emotion without being judgmental. I know that I am getting angry, not judgmental. What is the meaning of not judgmental? It means whether it is right or wrong. Don't judge yourself. I am getting angry. No, I am wrong. I am getting angry. No, just accept that yes, you know that you are getting angry. The act of naming emotion, the moment you name any emotion, it diffuses the power of that lizard brain, which is always on flight or fight mode. In our brain also we have got 2 parts. So that lizard brain, which is always on fight or flight mode, that power is diffused the moment you name the emotion. And the moment you write down that emotion, it helps you developing emotional vocabulary. You understand about that emotion. You understand about yourself. Next step is managing your emotions. How do you manage your emotion? Don't suppress your emotion. It is very natural to have negative feelings, negative emotions. Don't numb your emotion. It's okay to be wrong. It's okay to be angry. You cannot have 0 negative feelings. It is practically impossible. It is diffusing the challenging emotion. Identify the thought which have led you at that feeling, not the situation. What is distortion in your thought? Identify that. Talk to that distorted thought. This is how you manage emotion. Lots of activities can be done to manage those emotions. It could be becoming architect for a small task. Assign a small task to yourself. When you have that emotion or negative feeling, standing up in our hawk position. Think that you are Superman and you have all the power. Then you would be able to have different perspective of that emotion. Walking and running shake you out of your mood. Do that, or helping others in need and so on. Other activities also will be discussed by the end of this session. Next comes motivating oneself. Harnessing that emotion productively. The power of emotion is the next component of emotional cycle. Practicing impulse control. If you just analyze the data, 20% of productivity is increased. You delay the gratification process. If you practice those impulse control, be optimist. It can be learned. Being optimism can be learned. See the reason of failure, and those who see the reason of failure within their control, they are always optimists. So be the optimist. Getting into flow, paying attention to the task, that would help you to regulate the challenging emotion. When facing a common trigger that creates an eruption of anger or other emotional response, which is inappropriate if you feel, learn from it. Reflect on what you can do differently. Next time हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस emotion पे control कर सकें. These all steps would help you channelize the power of emotion. Recognize others' emotion. During COVID situation, your mama or papa will tell you not to move out. You get agitated. Why shouldn't I move out?
of house. My God, again COVID is there. Again we have to sit at one place, attend online classes. We won't be able to move out. But you recognize, understand your parents' concern, parents' emotion, how much worried they all are. That's why they are telling you not to move out, mental experiences. So please recognize others and handling the relationship. Once we are able to master our emotions, feelings and actions, we would be better in solution. These are the 5 steps everyone has to follow to develop emotional confidence. Okay, so these 5 steps are for everybody, like ma'am said. Yes, ma'am, you were saying something. Yes, I am just saying that in Aristotle words, it is a rare skill to be angry with the right person, to the right degree, to the right time, for the right purpose and in the right way. It's okay to have negative feelings. You should be mastering your emotion, should not master you. This is what we are going to work upon, and we all have to work upon. Students and teachers, we all 3 of us together have to work upon these emotional competence. Absolutely. Thank you. So this is exactly what we have to work upon, like ma'am mentioned. Be it students, be it teachers, be it parents, we all have to take care of our emotional competencies, and like she mentioned, knowing, managing, motivating, handling and recognizing. So please keep these points in mind and take care of your emotional well-being. Well, before leaving, we should know certain activities that are relevant for emotional mental well-being. So sir, would you like to tell us certain activities? Thank you, ma'am. There are some activities which are very relevant to enhance emotional well-being. The most 2 important which I am telling, first one should be grateful. Second, live in the present moment. These 2 must be included in a positive portfolio for everyone, and the rest one can choose accordingly. So as we become grateful, so it makes us feeling good, so it makes us happy. इस तरह से हम अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं. और इसके साथ साथ we need to respond rather than reacting. It has been observed most of the times, most of the people listen in order to react, not even to respond nor to understand. Basically, we need to respond and to listen to understand. Next, we should focus on physical exercise. जैसे हम जैसे जाते हैं तो सेरोटोनिन, तो उसके साथ साथ हमें इमोशनल बैलेंस करने में मदद मिलती है. और नेक्स्ट, इम्प्रूव स्लीप हाइजीन. हमें अपनी नींद, जो आजकल बच्चों में देखे जा रहा है कि वो लेट नाइट तक जागते हैं, और लेट नाइट तक जागने के बाद फिर वो लेट नाइट तक जागते हैं और उसके बाद वो सुबह जल्दी नहीं जाग पाते हैं. तो इसलिए उनको अपना स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहिए. इसके बाद मेडिटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ एक ऐसे कोई पोस्चर्स में बैठे हैं और कुछ ऐसी अवस्था में जहां हम करने लगे. वो ठीक है, बेहतर है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है. इसके साथ साथ जो माइंडफुलनेस है उसको हम इसके साथ मिला दें, तो हमें बी इन द मूवमेंट, हमें मूवमेंट में रहना है. इन द प्रेजेंट मूवमेंट, हम जहां हैं वहां हम रहें. ऐसा ना हो कि हम ऑटो पायलट मोड में चले जाएं. अब काम कुछ हम कर रहे हैं, पढ़ाई क्लास में है बच्चे, और उनको क्लास में रहना चाहिए, उनका अटेंशन, ना कि दूसरी चीजों में रहना चाहिए. इसके साथ साथ नर्चरिंग सोशल कनेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि वो अब ऑनलाइन गेम्स में ज्यादा खेल रहे हैं, तो उनको ऐसे गेम्स खेलना चाहिए जो आउटडोर गेम्स हो और जिसके साथ साथ वो आपस में मिल सकें. लेकिन आज ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो उसमें हम आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, तो इसके लिए हम दूसरे ऐसे गेम्स खेलें और जिसमें हम कनेक्टेड हो ऑनलाइन गेम्स के साथ साथ, लेकिन बातचीत भी हम करें, उनको कनेक्शंस में रहें, चाहे वो ऑनलाइन, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से. और मेंटेनिंग जर्नल्स, उनको कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए अपने इमोशंस को.
जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं, ये देखा गया है कि 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं रियलिटी में। जब हम सोचते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, लेकिन जब हमने देखा लिखने का, जब लिखते हैं उन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन, जैसे व्हेन वी गो ऑन एनुमरेटिंग दोज प्रॉब्लम्स, वी फाइंड ओनली 50% आर रिमेनिंग, और उसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत लाइट होती है, जो हम जब सोचते हैं बहुत हैवी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके और इसके साथ यहाँ मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ओके, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, और उसके बाद वी नीड टू एक्सेप्ट। हम फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है तो हम उसको तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। उसके साथ साथ हम जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे गाइडेंस भी लें। इसके साथ ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे इमोशनल वेलबींग को बढ़ाएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इमोशनल वेलबींग बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि अगर आप अपनी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज अपने हाथ में रखेंगे, उन्हें हैंडल कर सकेंगे, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इमोशनल वेलबींग से जुड़ी हुई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू हमारे सभी दर्शकों का भी ये कार्यक्रम देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और जानकारी अगर आपको चाहिए हमारे कार्यक्रम के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, CIET की वेबसाइट या फिर स्वयं प्रभा की वेबसाइट। जाने का वक्त हो गया है, हम आज के कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना जरूर देना चाहेंगे राष्ट्रीय कला उत्सव के बारे में। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2022 तक चलेगा हमारा राष्ट्रीय कला उत्सव। और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर NCERT के सौजन्य से 1 से 12 जनवरी 2022 तक कला उत्सव को आयोजित किया गया है। आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है वो हमारे YouTube के चैनल पर भी दिया गया है। आप चाहें तो उसे क्लिक करके इस कला उत्सव का भाग ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ राष्ट्रीय कला उत्सव का आनंद ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार।